KL Rahul ne on significance of this test victory, I won't say it's a sigh of relief. We are just happy and every test match victory is special. I think this victory will obviously give us a sense of happiness that we did the right thing and also give us the confidence going into the next game. Okay. आगे आइएगा उज्जवल जी, क्या बोला है इन्होंने? We also have a big home series coming up in India next year. So just understanding batting against spin and playing in spinning conditions is something that we've all been working on. From that point of view, it gives ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात बीजेटी के लिए बोल रहे हैं, ये बीजेटी की बात कर रहे हैं कि हम ना स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी स्पिन खेलने की प्रैक्टिस हो गई, तैयारी भी होगी. ये बड़ा स्टेटमेंट है केएल राहुल का. उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज की बात नहीं करी, उन्होंने ऑस की सीरीज की बात करी. उसने बोला कि सीधा हमारी बीजेटी पे नजर है, हमें हमसे स्पिन नहीं खेली जा रही थी, इस सीरीज से हमारी स्पिन की प्रैक्टिस हुई. तो बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया को ठोकना इनका मेन एम है. आगे आइएगा, एक तरीके से ये बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हटा के हम ही जाएंगे WTC फाइनल. देवदत्त पडिक्कल के बारे में बोल रहा है, फर्स्टली ऑन हिज इनिंग्स, आई थिंक दैट इनिंग्स वाज फॉर मी द डिफाइनिंग पार्ट ऑफ दिस टेस्ट मैच. वही तो उसी ने जिताया, नहीं सर मैच जिताया, उसी ने जिताया. द वे ही बैटेड, द टेम्पो दैट ही बैटेड विद, एंड to go on and get a big 100 in the first innings really set up the game for us. Okay, आगे आइएगा. The conditions were really hot and it was challenging physically as well. So for him to get through that, and firstly to get his first 100 is a special moment, but to go on from there and get a big 100, stitch partnerships with different players and get a big first innings total really set up the test match. Someone who I've played a lot of cricket with, seen, grown up and come. आगे आइए संजू जी. And come from Bangalore and play for Karnataka. I was really happy to be there and witness his first test 100. आगे आ जाइएगा और भी सुपर चैट देख लेते दोस्तों. KL Rahul on DRS. The conversation was there. The conversation there was, obviously you would have seen the video. I was walking back and felt like it was out. The only doubt that I had was, did I get it outside the line? जो इन्होंने झपिया पपिया करी थी DDP को. And he said, no, I don't think it's outside the line, but I think it might be high. तो मतलब उसने बता दिया कि outside the line तो नहीं है, line में तो है लेकिन height है. Might as well, तो उसने बोला might as well ले लो. We have 3 reviews, so just take it. So I reluctantly took the review. And then, when it happened to be missing, obviously, I didn't get too many runs after that. After that, how to be runs नहीं आए. यार इसकी पहली इनिंग में सेंचुरी बननी चाहिए थी. बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत प्यारा खेल रहे थे. वैसे बात इस टेस्ट में हुई है मानव सुथार की, जडेजा की, DDP की, पंत की, इवन जुरेल ने 50 मारा, लेकिन इसने बहुत अच्छा रोल निभाया है. पहली इनिंग में DDP ने आउटशाइन कर दिया, बिकॉज 167 लेकिन 80 प्लस, इसको क्रैम्प्स ना होते तो ये भी 100 मार रहा था सर. वो तो वापस जाके आके आउट हो गए. बहुत अच्छा खेला KL राहुल. आगे आएगा, देखे जरा और भी देख लेते क्या बोला. रविंद्र जडेजा, जड्डू obviously so experienced, he was there. So him along with Kuldeep and Manav obviously had their own plans and they were always talking to each other as to the pace, what pace to bowl at, when to bowl slow, when to bowl quicker, whether to bowl fuller or shorter. So they had good communication in between and that really helped. ठीक है जी, आगे आ जाइएगा. On meeting Gautam Gambhir, अच्छा, Gary Kirsten. We didn't do much reminiscing. We actually spoke about coaching and the challenges of coaching, and we both have very strong values around Test cricket. So we had a good conversation around that, obviously trying to help our players play the best Test cricket that they can, both countries. ठीक है? We spoke about that, and I think we have very similar ideas on how we want our teams to play Test cricket. So yeah, we had a good conversation around that. ठीक है? और कुछ? Manav Suthar bola, he's fantastic talent. He's got a lot of wickets already at test match level. I think he's a great spinner for test match cricket. He gets on top of his action a little bit and he gets the ball to bounce. I had the good fortune of meeting him a few years back at GT. Okay, so I got to know him and understand him a little bit. He's very respectful around the game, so I wish him well in his career. ये उनके साथ थे ना टाइटंस में, मानव सुधर भी वहीं पे. इनको सेकंड टेस्ट मैच के बारे में कुछ पूछा है कि भाई आप कमबैक करोगे? बस यही था कि इंजरी नहीं है तो कह रहे हमारे प्लेयर्स को साउट No, Kusal Mendes has got a proper hamstring injury. He's not going to be available for a while. So I'm not sure of the injury update, but as it stands at the moment, those guys, Nissanka as well, Dinesh is not available for next test. Kusal is not, but Kusal भी available नहीं है. चंडीमल भी अवेलेबल नहीं है और आपका निसंका भी अवेलेबल नहीं है. तो निसंका भी बाहर हो गया, चंडीमल बाहर हो गया, मेंडिस बाहर हो गया, टेस्ट मैच इन हो गया हमारा. वेरी गुड, 4 दिन टेस्ट मैच इन. तो उन्होंने यही बोला कि सुपर चैट दिखाइए संजू जी. प्लेयर्स नहीं है और हम कोशिश करेंगे जो भी नए प्लेयर आए अच्छा करें, और बाकी उनसे श्रीलंका के अप्रोच पे बात हुई तो वो हमने रखा नहीं साथ. बेहतरीन. अब्बास जी आ गए. गुरविंदर जी बहुत शुक्रिया आपका चाय टोस्ट भेजने के लिए, इज्जत अफजाई के लिए. आगे आ जाइए गुरविंदर जी. गुरविंदर जी, पावर पोषण. वाओ, पावर पोषण क्या होता है यार? What the hell is power potion? मैं देखना चाहता हूँ यार पावर पोषण क्या हुआ. कुछ do you know power potion? What is power potion? What is power potion? नहीं वो गिफ्ट भेजा है पावर पोषण इस पे.